what's up guys, my name is Bilal. In this lecture we learn about height and width in window object. जी हाँ गाइस, इस लेक्चर में हम बात करेंगे हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टीज़ की। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। यहाँ पर करना है आउटर। ओके, तो मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ आउटर। ओके, आउटर सेव। ठीक है, अगर गाइज मैं यहाँ रिफ्रेश करूँ और क्लिक करूँ तो आउटर हाइट कितनी है 738। ओके, तो गाइज ये यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पर ख़त्म हो रही है। ये जो ऊपर आपको मेन्यू दिख रहा है ये जो, ठीक है, तो ये आपको जो अगर ये ख़त्म हो जाए तो फिर आपको ये 768 जो एक्चुअल है वो आपको शो होगी। 768 एक्चुअल अभी कितनी है 738। ओके, अगर मैं इस टास्क बार पे यहाँ पर क्लिक करूँ, सेटिंग में जाऊँ इसकी, ठीक है,
और यहाँ से कर दूँ इसको टास्क बार हाइड। ओके, इसको मैं क्लिक कर दूँ तो देखें वो अब ख़त्म हो गया है। ठीक है, अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो अब आपको जो हाइट दिखाई देगा वो 768। ओके, अगर गाइस रिफ़्रेश करूँ और क्लिक करूँ तो हाइट कितना है, थैंक यू।